Dear students, I would like to present to you the proof of the fact that the function f of x defining a normal distribution is a proper PDF. So, in order to show this, what do we need to show? You already know that for any PDF, for it to be a proper PDF, the following two conditions need to be fulfilled. Condition number one, f of x should be greater than or equal to 0 throughout the domain of that function. And condition number two, the total area under the curve should be equal to 1. So let us try to see whether or not these two conditions are being fulfilled. सबसे पहले, let us recall what is the PDF of the normal distribution. It is as follows. Small f of x is equal to 1 over sigma under root 2 pi e raised to minus half x minus mu over sigma whole square. And of course, with this we will write minus infinity less than x less than infinity. तो पहली जो कंडीशन है कि small f of x must be greater than or equal to 0 throughout the domain. तो यहाँ पे तो पूरा का पूरा x एक्सिस है जिसके ऊपर ये डिफाइंड है. तो क्या ये सच है कि it will be non-negative throughout the x axis? इसके दो तरीके हैं इस बात को जज करने के. एक तरीका जो है वो ये है कि आप न्यूमेरिकल वैल्यूज रखें, म्यू की कोई वैल्यू ले लें और सिग्मा की कोई वैल्यू रख लें और उसके बाद एक्चुअली एक्स को डिफरेंट वैल्यूज देते जाइए और एफ ऑफ एक्स कंप्यूट करते जाएं और उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करें. Just like, the very first graph that you might have drawn when you were in school. All of us did that when we were in school. और उसका एक फ़ायदा आपको ये भी होगा कि आप अपनी अब खुद करेंगे और आप देख लेंगे कि ये जो ब्यूटीफुल बेल शेप आ जाती है, this particular PDF actually gives you that beautiful shape. दूसरा तरीका इस बात को जज करने का कि स्मॉल f of x is non-negative, ये है कि आप इस एक्सप्रेशन की तरफ देखें गौर से और just by looking at it you will find out that this is true. What do we have? 1 over sigma under root 2 pi. Now sigma is the standard deviation. It is a positive number. वो जो square root of 2 pi लिखा हुआ है, that is not the negative square root. So that whole thing is positive. तो वो तो पार्ट हो ही नहीं सकता नेगेटिव. अब उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको देखें. इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है e raised to something. अच्छा, अब ये e raised to minus something. तो अगर हम उसको नीचे ले आए डिनोमिनेटर के अंदर तो वो हो जाएगा e raised to half into x minus mu over sigma whole square. अब देखिए ये जो नीचे आपने हम ले गए उसको और e raised to half into something square, तो वो समथिंग स्क्वायर जो है वो तो नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है. हाफ के साथ मल्टीप्लाई कर दें वो फिर भी पॉजिटिव है और e रेज टू समथिंग पॉजिटिव इज ऑल्सो पॉजिटिव. अगर उसको ऊपर भी रहने देते तो e रेज टू समथिंग नेगेटिव वुड मीन वही बात कि 1 over e रेज टू समथिंग पॉजिटिव एंड इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज अ पॉजिटिव नंबर. सो देयरफॉर ये जो पहली कंडीशन हमें जो देखनी थी वो इट्स वेरी क्लियर. इट्स क्लियर दैट f of x will always be non-negative and that's the first condition fulfilled. अब इसके बाद let us try to derive the area under the normal curve and we would like to derive it such that we are hoping that this area comes out to be equal to 1. क्योंकि
for any PDF on Earth, the area under the curve should be 1. तो इसके लिए, how do we proceed? Very simple. Let us simply start with the word area. And what is this area equal to? It is the integral from minus infinity to infinity of f of x with respect to x, obviously. तो अब आप उसका expression वहाँ पे डाल दें. Integral from minus infinity to infinity of 1 over sigma under root 2 pi e raised to minus x minus mu whole square over 2 sigma square. आप इस तरह भी लिख सकते हैं, दूसरी तरह भी लिख सकते हैं. And this integral is being taken with respect to x. Students, अब हम यहाँ पे एक transformation apply करेंगे so that our work becomes simple. Let us do that same transformation that we do when we are trying to standardize the normal distribution. And what is that? We let z be equal to x minus mu and this thing divided by sigma. Now, if this is our transformation, this implies that sigma z is equal to x minus mu, and that further implies that x is equal to mu plus sigma z. अब अगर हम derivative लें dx by dz, what do we get? Mu का derivative 0 और sigma z का derivative sigma, because we are taking the derivative with respect to z. So 0 plus sigma is sigma. And therefore, we can write dx is equal to sigma dz या dz. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हम कर रहे हैं, ये बातें हो गई. साथ हमें we have to see what happens to the limits of the integration. देखिए, when x tends to minus infinity, z will tend to minus infinity minus mu over sigma. Minus infinity minus mu is still minus infinity. और अगर उसे एक positive number से divide करेंगे, that will still be minus infinity. So therefore, as x tends to minus infinity, z also tends to minus infinity. जो upper limit है, उसको देख लें. As x tends to plus infinity, z will tend to plus infinity या infinity minus mu over sigma. Infinity minus mu is still infinity. Infinity divided by a positive number is still infinity. So therefore, students, the limits remain unchanged. And then we can apply this transformation, and what do we get now? Area is equal to 1 over sigma square root of 2 pi. उसको तो हम बाहर ही निकाल लेते हैं out of the integral sign, और उसके बाद with that we multiply the integral from minus infinity to infinity of e raised to minus z square over 2. क्योंकि वो जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर वो आप उसको आपने z कह दिया है और बाकी -1/2 उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है. So it's simply e raised to minus z square over 2. उसके साथ पहले क्या लिखा हुआ था वहाँ पे dx, और अब हमें क्या लिखना है? हमने थोड़ी देर पहले इस्टेब्लिश किया कि dx is equal to sigma dz. So that is what we will put over there. अब आप देख सकते हैं कि जो पहले बाहर 1 over sigma under root 2 pi वाला sigma जो लिखा हुआ है, that will cancel with the sigma जो अभी हमने dz के साथ लिखा है. And we are left with 1 over square root of 2 pi integral from minus infinity to infinity of e raised to minus z square over 2 dz. अब इस इंटीग्रल को
students, we will break and we will break it into two equal parts. So we can write it as follows. The area is equal to 1 over square root of 2 pi into the integral from minus infinity to 0 of e raised to minus z square over 2 plus the integral from 0 to infinity of e raised to minus z square over 2. ये जो breaking का process है, that is a simple process well known in calculus. अब इसके बाद let us focus on the first one. ये जो पहला इंटीग्रल है from minus infinity to 0 of e raised to minus z square over 2, आप गौर से देखें कि this is an even function. ये जो इसके अंदर जो expression है e raised to minus z square over 2, that is an even function. क्योंकि even function क्या होता है कि अगर हम z की जगह minus z put कर दें and still we get the same thing, then that is an even function. तो जाहिर है कि z square हो रहा है. आप वहाँ लिख देंगे अगर minus z तो वो minus z whole square हो जाएगा and that is still z square. तो अगर ये even function है जो कि है, then we can have another transformation coming up. We can let w be equal to minus z, and then it is easy to show that this integral is equal to 0 to infinity e raised to minus w square over 2 dw. ये जो है it's very simple, इसको आप खुद कर लीजिए. अब ये जो आ गया 0 to infinity e raised to minus w square over 2 dw, तो इसमें आप realize करें कि w is a dummy variable. जब भी definite integral होता है तो आपको पता है कि सॉल्व करने के बाद अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट करते हैं तो वो जो वेरिएबल होता है वो तो गायब ही हो जाता है. उसका आमतौर पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर आ जाता है. तो ये डमी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करें. इसको मैं w कह दूं, t कह दूं, x कह दूं, y कह दूं या z कह दूं. It's the same thing. So I'm going to adopt this last one that I just said. मैं w की जगह z लिख देती हूँ. So what do I get? 0 to infinity e raised to minus z square over 2 dz. तो स्टूडेंट्स, जब आपने स्प्लिटिंग की थी अपने इंटीग्रल की, वहाँ पे क्या लिखा था? एरिया इज इक्वल टू 1 over square root of 2 pi. उसके बाद ब्रैकेट खोला गया था. ये पहला वाला इंटीग्रल जिसकी अभी मैंने डिस्कशन की प्लस आगे जो है दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. जो पहला है उसकी जगह जो अभी कहा है वही पुट कर दीजिए. तो आप देख रहे हैं कि दोनों जो हैं दे आर आइडेंटिकल. 0 to infinity e raised to minus z square over 2 dz. तो जब दोनों आइडेंटिकल हैं तो उनको ऐड कर लीजिए तो क्या मिलेगा? ट्वाइस 0 to infinity e raised to minus z square over 2 dz. And therefore area is equal to 2 times 1 over square root of 2 pi integral from 0 to infinity e raised to minus z square over 2 dz. अब ये जो 2 over square root of 2 pi है, this can be rewritten as square root of 2 over pi, and this is multiplied by that same integral. Students, let us do one more transformation. अब हम कौन सी transformation करेंगे? We are going to let v be equal to half z square या z square over 2. Let me say it again. We are going to let v equal to
z स्क्वायर ओवर 2। यानी अभी अभी जो एक्सप्रेशन आया हमारे पास उसमें e रेस टू माइनस जी स्क्वायर ओवर 2 है ना, वो जो है माइनस के बाद जो चीज़ है उसको हम v कह रहे हैं। If we do this and then if we take the derivative dv by dz, we get 2z over 2, that is z. And therefore we can write dv is equal to z dz. And if we want to find the value or the expression for dz, that can be written as dv over z. Ab z jo hai, what is that equal to? Our transformation was what? v is equal to z square over 2. So 2 को आप दूसरी साइड पे ले जाइए. 2v is equal to z square and the square root of 2v is equal to z. तो अब इसको यहाँ पुट कर दें. So what do we get? We get dz is equal to dv over square root of 2v. ये सब कुछ हमें हर दफ़ा ही करना होता है जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसी चीज़ें तो हम करते ही हैं. उसके साथ ही हमें वो दूसरा काम भी करना पड़ता है कि हमें देखना होता है कि लिमिट्स जो हैं उनकी क्या सिचुएशन है. अब हमारा जो ओरिजिनल जो चीज़ है उसमें हमारी लिमिट्स क्या हैं? 0 टू इन्फिनिटी. तो अब देखिए, इफ z इज इक्वल टू 0 या z इक्वल टू 0, देन 0 स्क्वायर ओवर 2 विल ऑल्सो बी 0. इसी तरह if z tends to infinity, then v will tend to infinity square over 2, which is of course still infinity. Therefore, students, the limits remain unchanged. Now, let us apply this on this equation that we have. Area is equal to square root of 2 over pi, वो तो वैसे ही लिख देंगे. उसके बाद मल्टीप्लाई करें उसको विद द इंटीग्रल. लिमिट्स भी वही हैं, 0 टू इन्फिनिटी. उसके बाद e रेस टू माइनस जी स्क्वायर ओवर 2 dz. इसकी जगह अब हमें क्या लिखना है? e रेस टू माइनस v dv ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2v. अब इसके बाद ये देखें कि वो जो बाहर एक स्क्वायर रूट ऑफ 2 न्यूमरेटर के अंदर है, that will cancel with the square root that I have just now put in the denominator. तो फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? I will have 1 over square root of pi integral from 0 to infinity e raised to minus v. और वो जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था स्क्वायर रूट ऑफ v, that was v raised to half, उसको ऊपर ले आइए, v raised to minus half dv. यहाँ पे आप रियलाइज करें कि ये जो इंटीग्रल है, it is similar, quite similar to the gamma function. सिर्फ इतनी सी बात है कि gamma function में अगर v की टर्म्स में है तो it should be v raised to something minus 1. बाकी तो वही है, 0 to infinity e raised to minus v, आगे एंड में dv. सिर्फ v की पावर इस तरह होनी चाहिए कि it should be something minus 1. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? We have v raised to minus half. We can write it as v raised to half minus 1. And as soon as we do that, we can see that this is a proper gamma function and it is equal to gamma half. वो v raised to half minus 1 जो है, वो जो पहला होता है उसके अंदर, वही तो उसकी वैल्यू होती है, यानी कि gamma of that. So therefore, my dear students, what do we have now? Now we have area is equal to 1 over square root of pi into gamma half. But it is a well-known result that gamma half is equal to square root of pi. So what do we have now? We have 1 over square root of pi multiplied by square root of pi. Cancel करें, and what do we get? We get 1. Hence, we have been able to prove
that the total area under the normal curve is equal to 1. और उससे पहले जो पहली कंडीशन थी कि f of x has to be greater than or equal to 0, वो हम पहले देख चुके हैं. Hence, it is proved that this complicated PDF is actually a proper PDF.